searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू ब्लॉग। स्वागत है आपका हमारे न्यू वीडियो पे। एंड बहुत टाइम से मेरे को एक वेइंग मशीन खरीदना था। एक्चुअली मैंने मतलब फूड के मेजर करने का वेइंग मशीन थोड़ा टाइम पहले ही खरीदा है। आई होप आप लोग ने हमारे वीडियो में देखा होगा। उसके बाद से अभी क्या होता है, सब कुछ मतलब मेरे को कितना कैलोरी खाना होता है, मतलब सब कुछ मैं मेजर करके खाता हूँ। एंड उसके बाद से मेरा कैलोरी सरप्लस अभी अच्छा जा रहा है। उसके बाद से मेरे को मतलब वेट गेन भी हो रहा है मेरा अच्छा खासा। बट उसको ट्रैक करने के लिए मतलब कितनी रफ्तार से मेरा वेट गेन हो रहा है उसको देखने के लिए मेरे को एक वेइंग मशीन था, मतलब वेइंग मशीन का ज़रूरत था, जिससे मतलब मैं मेरा बॉडी वेट मेजर कर पाता हूँ, मतलब मेजर कर सकता हूँ। एंड उसके लिए मैं क्या करता था, मतलब मैं 2-3 दिन में हॉस्पिटल जाता था, मतलब मेरा वेट चेक करने के लिए, मेजर करने के लिए। एंड उधर जाके मतलब आने में मतलब टाइम भी लॉस होता था। एंड अभी पेट्रोल का भाव बहुत महंगा है नेपाल पे। एंड इसकी वजह से पेट्रोल भी ख़त्म होता था। एंड बहुत कुछ मतलब दिमाग ख़राब हो रहा था आगे। एंड उसकी वजह से मेरे को एक वेइंग मशीन खरीदना था, जिस पे मतलब मैं मॉर्निंग पे फ्रेश हो गए, जिस पे मतलब मेरा बॉडी वेट चेक कर पाता हूँ। एंड उसकी वजह से मतलब मैं देख पाता हूँ कि देख सकता हूँ और मेरा वेट गेन कितने रफ्तार से हो रहा है, मतलब कितना प्रोग्रेस हो रहा है। तो फाइनली मतलब मेरे को देखना था। तो उसके बाद से मतलब मैंने वन मोर इन्वेस्टमेंट किया है, ये ख़रीदा है मैंने। आप लोग इधर देख सकते हो, कुछ इस टाइप का है ये वेइंग मशीन। इस पे 180 किलो तक हम मेजर कर पाते हैं कि। यानी इधर आप लोग देखो कुछ इस टाइप से। अब इसका बैटरी ख़त्म होने वाला है कि। एंड ये न्यू नहीं है, ये अराउंड 2-3 महीना यूज़ किया हुआ वेइंग मशीन है। बट कोई बात नहीं, इसका उतना मतलब क्या बोलते हैं काम भी नहीं होता है हमको। सिर्फ दिन में एक बार होता है, मतलब मॉर्निंग को हम फ्रेश होंगे, उसके बाद मतलब फ्रेश होके हम इधर मेजर करेंगे हमारा वेट एंड देखेंगे मतलब कल से आज कितना ग्राम हमने गेन किया, मतलब एक कुछ हमको देखना है। एंड मैं सब कुछ नोट करके रखूँगा। एंड मैं देखूँगा अभी इस पर मेरा वेट गेन का मतलब प्रोसेस कितने रफ्तार से जा रहा है एंड कितना गेन कर रहा हूँ, सारा कुछ अभी मैं ट्रैक कर पाऊँगा। क्योंकि अभी खाने के मामले में भी मतलब एक वेइंग मशीन है जिस पे मतलब मैं सब कुछ मेजर करके खाता हूँ, सब कुछ वेट करके मेजर करके। एंड अभी इधर मेरा बॉडी वेट भी मेजर करूँगा। उसके बाद से अभी मेरा फिटनेस का थोड़ा जर्नी अभी आसान होगा एंड बहुत अच्छा होगा। तो इसको एंड उसको मैं अच्छे से यूज़ करूँगा एंड इसका फ़ायदा उठाएंगे हम आके। तो वही है, मेरे को आपको ये दिखाना था। अगर आप भी मतलब वेट गेन कर रहे हो, अगर आप लोग वेट मतलब फैट लॉस कर रहे हो, सब कुछ के मामले में अगर आपके पास इस टाइप का होंगे तो क्या होगा, थोड़ा आसान होगा। मतलब आप लोग देख पाओगे, मतलब ट्रैक कर पाओगे, मतलब आपका फैट लॉस कितने मतलब रफ्तार से हो रहा है, आपका वेट गेन कितने रफ्तार से हो रहा है। ओके, समझ रहे हो ना आप। तो वही था। एंड पिछले वाले ब्लॉग में मैंने आपको मेरे डाइट के बारे में बहुत ज़्यादा ही वीडियो मतलब ज़्यादा ही बात किया था डाइट के बारे में। तो आज के वीडियो में हम उतना डाइट के बारे में बात नहीं करेंगे, सीधा हम ट्रेनिंग दिखाएंगे आपको। तो वही है, अभी आप लोग भी प्री वर्कआउट लेना, मतलब डाइट लेना, मैं भी अभी प्री वर्कआउट लूँगा एंड हम ट्रेनिंग पे मिलते हैं अभी। तो ट्रेनिंग पे मिलते हैं, चालू ट्रेनिंग। Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed, a life destroyed. Until I walk awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. How much can I take? My mind will break. Will it break? Can I take?
the first time of today. Today. To dream, believe. You are the strength, you're all I need. Oh, gonna give it a shot. Only one of me to shield you all from the enemy. You're a superhero. You're a superhero.